और दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आप जाके अभी पढ़ सकते हैं लाइव। और यहाँ पर आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स इंडिया के, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएएमसी से पढ़े हुए लोग और काफ़ी ज़्यादा एम्स दिल्ली से पढ़े हुए बच्चे भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर जाके आप जो है लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको पढ़ाई करना है वहाँ पे, तो आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे AB सर, तो आपको वहाँ पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनअकैडमी पे आपको क्यों पढ़ना चाहिए, लाइव क्लासेस मिलती है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आज की न्यूज़। So there are two educationalists which are mainly commenting on the NEET and JEE issue. I will read out both the statement to clarify all the situation. Dr. Murali actually said that everyone is under this stress during this COVID pandemic and the cases are only expected to increase in July and August. An examination of crores of students across the country would be impossible to hold safely. At least for this 1 year, the examination must be scrapped for the students' sake. And then the other educationalist, which is actually Jayavardhan Mani, the president of school association, he actually said the point of board exams. So he quoted that postponement until COVID cases come down is also not an option, since it will only affect the mental health of a student. The student can instead be admitted based on the board exam scores than entrance exam. So actually it is the statement of V. Jayavardhan Mani, the president of Trinvelli Matriculation Schools Association. Sorry if I read it wrong. So this is the statement of Dr. Jayavardhan, not the statement of Dr. Murali, which are many students are thinking about, that the board exam should be taken as a criteria for the admission in engineering and medical colleges across the country. So it is a big decision. If it is approved by the government of India, then it will affect many lives of many dropper students which are being preparing for the exam since 2 to 3 years. So it is a very big decision and we have to keep an eye on it. I will update you every hour if any news comes out, and I will update you. I will try to update as soon as possible, so you can subscribe to my channel for more latest updates. और यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जाके चेकआउट करिए अनअकैडमी पे, मेरा कोर्स चल रहा है अभी। वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब मैंने पढ़ाया वहाँ पे। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं AB सर। थैंक यू वेरी मच।